set, and here we go. Good evening, everyone. Good evening, and welcome to Unacademy CLAT. On YouTube, I can assure you that Unacademy CLAT is the leading platform to prepare for CLAT and other 5 years law entrance examinations. And yes, generally saying that Unacademy तो अपने आप में है ही सबसे wonderful platform to prepare for any particular examinations, and law entrances are no exception to this rule. Yes, and undoubtedly, I feel no doubt in saying that जितना wonderful ये platform है, उतने ही wonderful हमारे सभी learners भी हैं. Yes, guys. So I welcome all the wonderful learners to this equally wonderful platform, Unacademy, that makes your learning easy, effective, efficient, and interesting. So I hope you are much familiar with me. I am Sarthak Sharma, your legal reasoning expert, and I welcome you all to this super interesting and super important class in which I am going to discuss some important constitutional and non-constitutional bodies. हम सभी को पता है कि इंडिया में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी ऑथोरिटीज हैं, some of them are constitutional, some of them are autonomous, some of them are statutory, and इन सभी बॉडीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स there are high chances that questions related to these constitutional and non-constitutional important bodies is going to come up in the 2022 law entrance examinations as well. So yes, और बात करते हैं legal GK की, तो yes, it's a subtopic of legal GK only, and guys, believe me, legal GK is an inseparable part of any particular law entrance examinations. भले ही क्लैट और एलेट ने अपने लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन को रीनेम करके लीगल रीजनिंग कर दिया. ओके, एलेट में तो लीगल रीजनिंग भी लॉजिकल रीजनिंग का इंटीग्रल कर दिया गया, बट दैट डजंट मीन कि लीगल जीके आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया. नो, बिकॉज जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन स्टिल एग्जिस्ट करता है, एंड लीगल जीके इज अ सब टॉपिक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. ऑब्वियसली इन द जीके एंड सीए सेक्शन legal GK is going to hold a considerable portion. Okay guys, let's continue with the class शुरू करते हैं without any further delay, but before that I would just take 10 seconds to switch on the live chats. अब live chat पर मेरी नजर होना बहुत जरूरी है, because if the live chat is not visible, no class can be a super class. Okay, finally the live chats are over my screen. I would like to have a quick affirmation from the students who have joined me live that I am absolutely audible and visible to all of you. Hi Nafisa, how are you? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियरली आ रही. Okay, until the students confirm, I would move on with the class. So the first and the foremost thing in any class is the introduction of the educator. So although you all know me, but for those students who have joined me for the first time, let me introduce myself to you. Guys, I am Sarthak Sharma, and I am having more than 2 years of experience in teaching students for different law entrances. And during my journey of these 2 years, I have been mentored to more than 10,000 students. 10,000 students, it's an approximate figure, almost 10,000 students के साथ मैंने पर तैयारी की है और करवाई है for law entrance examinations, and I can proudly say that out of these 10,000 students, a lot of them have been rankers, top rankers in CLAT, SLAT, BLAT, JMI, LET, AI, LET, MH set, CU set, Allahabad LFET, and some more examinations as well. So yes, I'm proud that I have produced a lot of rankers in these examinations, and with same proud, जितनी इंटेंसिटी इस प्राउड की है उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी है एक होप की. The hope is that this list of rankers produced by me is going to be even bigger. और इसको बड़ा बनाना है आप लोग. You guys have the duty to harvest the hope that I have. I'm good, sir. Nafisa, I'm also good. Hello, Shilpi. Guys, the big news. I hope you all have this. You all have got hold of this news already. CLAT 2022 and AI LET 2022 both have been postponed on the very date जिस दिन को
CBSE का नोटिफिकेशन आया था ऑन दैट डेट ओनली. आई स्टूडेंट्स आस्क मी दैट क्या सर क्लैट और एलेट आप अपनी उन्हीं डेट्स पर होगा जिन डेट्स पर वो शेड्यूल्ड है. I said clear cut no. I said that CLAT and ALET are bound to be postponed now because they cannot afford to clash with CBSE. और ऐसा ही हुआ. Just recently, some days back, CLAT and ALET revised their dates. The dates have been postponed, and the new date for CLAT 2022 is 19th of June. The last date for registration has also been extended till 9th of June. It's a Sunday. So सिर्फ एक चीज जो नहीं बदली है वो ये है कि CLAT अभी भी संडे को ही होता है. ALET 2022 will be on next Sunday, exactly 7 days after CLAT, on 26th of June, and the last date for registration is 25th of May. So make sure कि आप डेडलाइन से पहले रजिस्टर कर लें एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन को ध्यान में रख कर चलें. Enroll now to Unacademy courses and maximize your chances, optimize your chances of cracking CLAT and ALET. Guys, I hope you all participated in this scholarship test that was scheduled today only at 3 p.m. in the afternoon. Today, on 20th of March, we celebrate World Happiness Day. So first of all, let me just congratulate all of you. I wish you a very happy World Happiness Day, and remember that happiness is the journey, not the destination. यानी happiness is the preparation. अगर आप अपनी इस preparation से सोच रहे हैं कि अभी हम खुश नहीं है, जब मैं NLU में पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी तब मैं खुश होऊंगा, तो आप कभी खुश नहीं होने वाले हो. Believe me, this thing, इसको नोट कर लीजिएगा. Because happiness is the journey, not the destination. If you will enjoy the journey, then you will reach to the destination. So the basic thing that I want to tell you is this, कि अपनी प्रिपरेशन को enjoy करते हुए खुशी खुशी प्रिपरेशन के टाइम को बिताइए. डेस्टिनेशन कब आ जाएगी और आप कब NLU तक पहुंच जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा. I hope you have participated in this scholarship test, Unacademy All India Scholarship Test for CLAT that was conducted at 3 p.m. today. आज दोपहर 3 बजे हुआ था ये स्कॉलरशिप टेस्ट, and the winners, the rankers, have a chance of winning 10 lakh scholarships. The results have not been declared yet. I hope you participated, and let's wait for the result. I know that you did well in it. Good evening, Waka and Study. Okay, you guys can join me on Telegram. The Telegram link is over the screen. The same link you will find out in the description box. Sarthak Sharma, The Legal Game is the name of the Telegram group. And here you will get the daily schedule of my classes. You will get certain homeworks and class notes whenever required. And you will get your doubts resolved whenever you are engaged in self-study. Believe me, self-study is the key to success. जब भी आप self-study में engaged हैं, तब doubts आने तो natural हैं. No matter how sharp your mind is, but still doubts are natural to arise. When such doubts comes your way, just put those doubts in this Telegram group, and I will personally adhere to your doubts. Special class features. So you all guys might be knowing that special classes are the free classes on Unacademy. And to attend these free classes, you just need to have the Unacademy app in your Apple or Android smartphone. Once you have this app, in the invitation code, write down SRT10. This magic code will unlock all the free features for you. So सारे free features आपके लिए unlock हो जाएंगे, including the special classes. Do attend. I have taken a lot of special classes over the Unacademy app. I'm going to take in future as well. Apart from me, a lot of educators are taking special classes on a daily basis on Unacademy app. So in special classes को तो at least attend कीजिए. These are the free classes. Now there are some premium, more better classes as well on Unacademy app. These are the paid classes. So Unacademy पर बहुत सारे courses and classes चल रही हैं for our CLAT and other 5 years as well as 3 years LLB exams preparation. So Unacademy CLAT and other 5-year LLB exam subscription comes under 2 different categories. For the first is Iconic and another is Plus. The price for Iconic subscription and Plus subscription is on a screen, but these are not the final prices. You all know that you can get an additional 10% discount if you will use the code SRT10. So SRT10 code को use कीजिए and get 10% additional discount
And guys, for those students who do not want to pay in lump sum, there is a no cost EMI offer as well, which is available on 6 months and above subscription in both Iconic and Plus. So go for the subscription and do not forget to use the code SRT10. Alright, you just noticed that the price of Iconic is higher when we compare it to Plus. But why? Because in CLAT Iconic program, which is a flagship program for CLAT aspirants, you will get everything which is provided in Plus. In Plus, you have India's best educators, daily live classes, live tested quizzes and structured courses. ये चारों benefits तो आपको Iconic में भी मिलते हैं. But apart from it, you will get live one-to-one live mentorship program, live doubt solving, and a priority in raise a hand feature. So you just notice that the biggest USP of Iconic subscription, is one-to-one live mentorship program. So what is it basically? Actually, the one-to-one live mentorship program, you can connect and avail a one-to-one time in which you will just आप और आपके mentor, ये दो ही लोग होंगे. No other person would be there to disturb you. You can connect with your mentor over an audio call, a mentor of your choice, and at a time of your preference and in a language of your preference. You can get your doubts resolved, you can discuss exam strategy, and you can discuss anything else that can maximize your chances of cracking your target examination. So do book your session by subscribing to Unacademy Iconic. And while subscribing, do not forget to use the code SRT10 to get 10% additional discount. Hello Deepak, how are you? Moving with the class. So आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. The topic of this class is, I hope I can have a sip of water. गर्मियां आने लगी हैं तो प्यास थोड़ी ज़्यादा लगने लगी है, and to keep your body hydrated, do drink at least 4 to 5 liters of water daily. Alright, आज की क्लास का टॉपिक है important constitutional and non-constitutional bodies. Yes, today's class is based on legal GK, not legal reasoning. तो concept based class नहीं है, knowledge based class. और इस क्लास में I'm also fine Deepak, absolutely I'm in pink of my health. और आज की क्लास में आप लोग बताएंगे, आप लोगों का भी नॉलेज टेस्ट साथ साथ होगा. You will tell me that whether the body about which I'm discussing is a constitutional or a non-constitutional body. मैं दोनों important bodies discuss करने वाला हूँ. Okay, so the first important authority or body that we will discuss is CAT. Tell me, what is the full form of CAT? What is the full form of CAT? First of all, I hope you all know that constitutional bodies are those bodies that are provided in the constitution. यानी भारत के संविधान में इन बॉडीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल या प्रोविजन है. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडीज दैट आर नॉट प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. Tell me, what is CAG? CAG is Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General. Guys, you can just say, सबसे आसान भाषा में जैसे आप समझ सकते हैं, who is Attorney General? Attorney General is the lawyer of the central government. जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है केसेस में, वो अटॉर्नी जनरल होता है. Who is CAG? CAG is the टैक्सेशन लॉयर. लॉयर्स हमेशा वो नहीं होते हैं जो केस में, जो कोर्ट्स में केस आर्ग्यू करते हैं.
कुछ टैक्सेशन लॉयर्स भी होते हैं जो ऑडिटिंग करते हैं. ओके, कैग में सीए वर्ड आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि इनका काम सीए जैसा ही होता है. ये अकाउंटेंसी करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट की. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, एंड इट इज जस्ट लाइक अ टैक्सेशन लॉयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एज वेल. एक चीज और ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट. तो याद रखिएगा, and for the central government the lawyer is attorney general, and who is the lawyer for state governments? It is advocate general. But when we talk about the auditing, then there is no CAG at the state level. एक ही CAG है और यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेंट्रल लेवल पर भी काम करता है और स्टेट्स के लिए भी काम करता है. दिस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्क्स फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट and state governments. Okay, so can you tell me which month's current affairs for CLAT 2023? Okay, CLAT 23 is scheduled in December. I hope you know, Shazia. CLAT 23 इसी साल दिसंबर में होगा, दिसंबर 2022 में. So you should start the current affairs from this month onwards, from the month of March. Okay, Comptroller and Auditor General. It works for both central and state government. What are the articles? Vakar, you are absolutely correct. It's a constitutional body. First of all, remember that CAG is a constitutional body. चलिए बताइए, अगर एक constitutional body है, then which article of the Indian Constitution provides for CAG? Which article of the Indian Constitution provides that there shall be a Comptroller and Auditor General of India? The right answer is Article 148. Note down this article, important article. Article 148 says that there shall be a CAG, a Comptroller and Auditor General. Okay. Okay, one important question. चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, and it is not my question. This question was raised in AILET previous year papers. Question is that which among the following bodies or officers hold their office at the pleasure of president? Okay, which of the following bodies or officers do not hold their office at the pleasure of president? Option A, Advocate General. Option B, Attorney General. Option C is CAG. And option D is Election. Okay, Election Commissioner नहीं होगा. Option D को हम रखते ही नहीं. There are three options. Which among the following bodies do not hold their office at the pleasure of president? Through this, the D is Solicitor General. You may say. Remember, the right answer is option number C. Attorney General and Advocate General holds their office at the pleasure of President. यानी जब भी President of India को लगे वो इनको इनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं. बट कैग में ऐसा नहीं. ओके, रिमेंबर, a CAG do not hold the office at a exclusive pleasure of President. ऐसा नहीं. Okay, for removal of CAG, the proceedings are just same as removal of a Supreme Court judge. Removal of CAG कैसे होगा? So important point.
how a comptroller and auditor general can be removed. The removal is similar to the proceedings of removal for a Supreme Court judge. Similar to that of Supreme Court judge. Means impeachment के through होगा. How a CAG is removed? Simply president remove नहीं कर सकते. Okay, there shall be a voting in the houses of parliament with majority. और उसके बाद ही वो remove हो सकते हैं. So remember, an important thing that CAG do not enjoys the office at the pleasure of the president. Instead, his removal is similar to a Supreme Court judge, and there shall be majority by both houses of parliament, or then only a CAG head can be removed. Okay. So comptroller and auditor general से related और भी कुछ important बातें हैं, but that is not essential for a law entrance examination. You just need to remind that CAG is a constitutional body provided in Article 148, and its removal is similar to that of a Supreme Court judge. Hence, he do not enjoys the office. He do not holds the office at the pleasure of the president. सिर्फ president के pleasure पे office hold नहीं करता है क्या? Okay, what is the tenure for which a CAG is appointed? कितने साल के लिए appoint होता है? CAG is appointed for 6 years. And what is the retirement age? 65 years. Okay. So a comptroller and auditor general is appointed for 6 years. या अगर इन 6 years के कंप्लीशन से पहले 65 years की एज हो गई है तो वो रिटायर हो जाएंगे. Whichever is early. Okay, 65 years age और 6 years term. Whichever is earlier. For instance, there is a person who is appointed as CAG at the age of 65, at the age of 64. तो एक साल बाद ही ऑफिस से हट जाएंगे. He would be retiring in just 1 year क्योंकि 65 years की एज हो. So a CAG is appointed for a term of 6 years. But if the age of 65 comes before the completion of 6 years, then the CAG will retire. So the age of retirement is 65 years and the term is for 6 years. Nafisa is saying, sir, please clear the work of CAG. CAG का काम है ऑडिटिंग करना. ओके, ऑडिटिंग करना, ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करना, जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के वो प्रिपेयर करना. ओके, ऑडिटिंग करना. ऑडिटिंग मीन्स अकाउंटिंग. दैट इज द वर्क ऑफ CAG. जितने भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं उनको कितना कितना पैसा दिया गया है, सबका हिसाब रखना. बेसिकली भारत सरकार का जो मुनीम होता है उसको हम CAG कहते हैं. गॉट इट? यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ CAG इन सो डिटेल. CAG के लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 में प्रोवाइडेड है, और इसका रिमूवल प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है. क्यों जरूरी है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जब चाहे अटॉर्नी जनरल को हटा सकते हैं, CAG को नहीं हटा सकते. टेल मी, सॉलिसिटर जनरल, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड CAG आर constitutional bodies. Is solicitor general a constitutional body? The answer is no. Solicitor general is not a constitutional body. Coming to the second body, which is important, it is Election Commission of India. Election Commission of India. First of all, tell me, is it a constitutional body or a non-constitutional body? बताइए. Okay,
Election Commission of India is a constitutional body. First of all, you should know this. When this body came into force? When was it established? बताइए, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो सबसे पहले आर्टिकल बता दीजिए. विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 324. आर्टिकल 324 कहता है दैट देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड? डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बता दीजिए. Tell me, on which date the Election Commission of India was established? Same question को मैं थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेता हूँ. On which date do we celebrate National Voters Day? The answer for both the questions is same. Nafisa, you answered it correctly. 25th January. यानी रिपब्लिक डे से ठीक एक दिन पहले 25th January 1950 Election Commission of India was established. And on this date every year, on 25th January every year, we celebrate National Voters Day. ये भी important question है. This question had been in the examination, that when do we celebrate National Voters Day? We celebrate National Voters Day on 25th of January every year. Because 25th January 1950 को Election Commission of India establish हुआ था. इसके अगले ही दिन 26 जनवरी को हम रिपब्लिक बने थे. एंड बेसिकली रिपब्लिक क्या होता क्या है? वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन. जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन हो, मोनार्की का आउटकम ना हो. इलेक्शन के लिए वोटिंग जरूरी थी और फेयर एंड इलेक्शंस कराने के लिए ये बॉडी जरूरी थी. तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इंडिया के रिपब्लिक होने से ठीक एक दिन पहले उस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो बॉडी इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराती है. एंड दैट बॉडी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So the date of establishment is 25th of January, just one day before the Republic Day. And on 25th January, due to this, क्योंकि इस दिन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. Okay, that's why we celebrate National Voters Day on 25th of January as a foundation day of ECI. Okay, tell me one more thing. क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है? क्या ये एक जुडिशियल बॉडी है या फिर एक लेजिस्लेटिव बॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस मीन्स इट डू नॉट फॉल्स अंडर द ऑथोरिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉडी. ये किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है. अपार्ट फ्रॉम इट, इट इज क्वाजी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट इज क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड सभी डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने की जो पावर है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है. सो इट इज ऑल्सो अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी. यानी ये जुडिशियल फंक्शंस भी कंडक्ट कर लेती है. Okay, now guys listen to one thing carefully. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसको लेकर एक स्पेशल क्लास होगी. The special class would be conducted tomorrow. The timing is not sure. It would be somewhere in the afternoon. Telegram group पर update हो जाएगा, but there would be a special class at Unacademy App. It would be a free class. And I will update the link of that special class in the comment section of this video. मैं इसी सेशन की कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस स्पेशल क्लास का. इस स्पेशल क्लास में हम स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे. इन दिस स्पेशल क्लास वी विल डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन,
Apart from it, we will discuss in this class the powers and duties of Election Commission. Important articles related to Election Commission, including universal adult franchise. And yes, we will also discuss one more thing. Okay, Nafisa, I'm coming to your question. सॉरी बका, हाँ मैंने इस क्लास के बारे में टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं बताया. यू आर राइट. ओके, सॉरी, वो रह गया, बट नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द क्लासेस विल बी अपडेटेड ओवर द टेलीग्राम ग्रुप. Powers and duties, and we will also discuss about election commissioner and chief election commissioners. ये जो authorities हैं, जो bodies हैं, officers, इनके बारे में भी हम बात करेंगे. नफीसा इज आस्किंग सर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और क्वाज़ी जुडिशियल में डिफरेंस. दोनों ही अलग अलग चीजें हैं. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मींस दोज बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइडेड नहीं है. क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज मींस दोज बॉडीज जो जजेस यानी जुडिशियल बॉडीज की तरह यानी कोर्ट्स की तरह ही फंक्शन कर रही हैं, बट वो कोर्ट्स हैं नहीं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में एडजुडिकेशन करता है, यानी अपना जजमेंट देता है. यानी वो कोर्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो कोर्ट नहीं है. क्वाज़ी मींस इट लुक्स लाइक इट बट इट इज नॉट इट दिस थिंग. यानी लगता तो उसके जैसा है लेकिन वो है नहीं. दैट मींस क्वाज़ी. Okay, coming to the third body. The third body is Lokpal and Lokayukts. Lokpal and Lokayukts. First of all, tell me, Lokpal and Lokayukt constitutional body है या non-constitutional body? Is it a constitutional body or a non-constitutional body? The Lokpals and Lokayukts are non-constitutional bodies. जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो फिर ये कौन सी बॉडी है? These are statutory bodies. Okay, these are statutory bodies. Means these bodies are okay. Nafisa, these are non-constitutional, not constitutional, and these Lokpal and Lokayukts are actually statutory bodies. Statutory bodies means वो bodies जो particular statute यानी act of legislation, act of legislature enact करता है. And these are constituted under the Lokpal and Lokayukt Act of 2013. में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया, यानी एक स्टैट्यूट बनाया. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टैट्यूट. ओके, व्हाट इज स्टैट्यूट? स्टैट्यूट इज एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. मीन्स अ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो भी लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो लेजिस्लेचर ने बनाए रही है, वो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया. कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है उसको हम एक्ट कहते हैं. इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और स्टैट्यूट. और इस स्टैट्यूट के अंदर जो भी बॉडीज बनती हैं उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं. इस स्टैट्यूट के अंदर जो भी राइट्स दिए गए हैं वो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज आरटीआई? राइट टू इंफॉर्मेशन. इज इट अ फंडामेंटल राइट और अ स्टैट्यूटरी राइट? टेल मी, व्हाट इज आरटीआई? आरटीआई क्या एक फंडामेंटल राइट है या फिर एक स्टैट्यूटरी राइट है? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Statutory rights are those rights that are provided in a particular statute. RTI is a right to information, is a statutory right. Remember, the right to information is a statutory right, not a fundamental right.
because it is provided in RTI Act of 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में है। हालांकि अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक लोकपाल एंड लोकायुक्त। सो लोकपाल एंड लोकायुक्त आर अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी which is established under Lokpal and Lokayukt Act of 2013. Hence, it is a statutory body. अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अन्ना हजारे का आंदोलन किसी को याद है? अन्ना हजारे ने आंदोलन किस चीज के लिए किया था? अन्ना हजारे ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, जिसमें कुमार विश्वास भी थे, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पूरे देश में और दिल्ली के रामलीला मैदान में यह आंदोलन किया गया था। आई होप यू गाइज रिमेंबर, तब हम इतने छोटे नहीं थे। 2012-2011 में यह आंदोलन हुआ था। इट वॉज फॉर लोकपाल। तब अन्ना हजारे ने डिमांड की थी लोकपाल की, और उन्हीं की डिमांड को फुलफिल करने के लिए फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लेकर आई। गॉट इट? सो लोकपाल इज एट सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकपाल है, एंड लोकायुक्त आर एट स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए लोकायुक्त है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट में अपना एक अलग लोकायुक्त होता है। इन एवरी स्टेट देयर इज अ लोकायुक्त। यूपी का अपना एक अलग लोकायुक्त है, महाराष्ट्र का अलग है, पंजाब का अलग है, एंड लोकपाल इज एट द सेंट्रल लेवल। गॉट इट? हु आर दिस लोकपाल एंड लोकायुक्त? यस नफीसा, लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया वो यही था। व्हाट इज दिस लोकपाल एंड लोकायुक्त? बेसिकली अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो था करप्शन खत्म करने, एंड अकॉर्डिंग टू हिम अगर करप्शन रोकना है तो लोकपाल एंड लोकायुक्त होना जरूरी है। डिड यू गॉट इट? व्हाट वाज लोकपाल एंड लोकायुक्त? बेसिकली दीज आर द बॉडीज दैट विल एक्ट एज ऑम्बड्समैन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ऑम्बड्समैन। डू यू नो दैट व्हाट इज ऑम्बड्समैन? इफ यू डू नॉट नो, then go and find out the meaning in dictionary. Ombudsman means those body that listens to that hears the citizens complaint against the government officials. सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिशियल्स के खिलाफ जो भी करप्शन के एलिगेशंस हैं या कंप्लेंट्स हैं, उनको सिटीजन्स की जो भी कंप्लेंट्स हैं या फिर करप्शन के एलिगेशंस हैं, उन सभी करप्शन एलिगेशंस एंड कंप्लेंट्स को जो बॉडी सुनती हैं उन्हें हम कहते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त, उन्हें हम कहते हैं ऑम्बड्समैन। गॉट इट? व्हाट इज ऑम्बड्समैन? दीज आर द बॉडीज और ऑफिशियल्स, सिंपली यू मे से ऑफिसेस, दैट लिसन, दैट हियर citizens complaints against गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी सरकारी नौकरों के खिलाफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स आती है करप्शन से रिलेटेड, उनको सुनने के लिए जो बॉडी बनाई गई है उसे हम कहते हैं ऑम्बड्समैन। एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त आर ऑम्बड्समैन। गॉट इट? तो लोकपाल और लोकायुक्त का काम है करप्शन एलिगेशंस में इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। अगर किसी भी पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट करप्शन एलिगेशन आता है तो लोकपाल उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं तो लोकायुक्त करेंगे। यस नफीसा, जैसे आप बता रहे हैं अन्ना हजारे ने हंगर स्ट्राइक की थी जंतर मंतर में, ये लोकपाल बिल के लिए की थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर करप्शन को खत्म करना है इंडिया में से, जो करप्शन सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस ही करते हैं, तो ऑम्बड्समैन की जरूरत होगी, और ये ऑम्बड्समैन ही है लोकपाल एंड लोकायुक्त। गॉट इट? ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता then guys believe me you are not going in the right direction because it's a very easy question. The question is, who is appointed as India's first लोकपाल? इंडिया के पहले लोकपाल कौन है?
Tell me, who is India's first Lokpal? He's a judge. He had been a justice of Supreme Court. Anybody here who know the right answer? Okay, I give you 10 more seconds. फिर मैं आपको right answer बता. Nobody knows. Guys, the time is okay. Nafisa, you answered it. Paka, you as well. You both are correct. It is Justice P.C. Ghosh. Justice Pinaki Chandra Ghosh. Justice Pinaki Chandra Ghosh. Very important question. Justice P.C. Ghosh. Justice P.C. Ghosh was India's first Lokpal. बहुत ही important question. One more question. Which is the first Indian state? ये एक और current affairs का question और important है. Which is the first Indian state to have a लोकायुक्त? कौन सी है इंडिया की पहली स्टेट जिसने अपना एक लोकायुक्त अपॉइंट किया? इंडिया में अब तक सभी स्टेट्स के पास अपना लोकायुक्त नहीं है. कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है. बट विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ लोकायुक्त? गाइस, इट इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र सबसे पहली स्टेट थी जिसने अपने खुद के लोकायुक्त को अपॉइंट किया. ओके, so लोकपाल एंड लोकायुक्त इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी. नाउ क्योंकि ये रिसेंट की भी है, 2013 में ही लोकपाल एंड लोकायुक्त आई, इसलिए लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना जरूरी है. ओके, लाइक द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल. पिनाकी चंद्र घोष इज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल. चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कि लोकपाल के मेंबर्स को सेलेक्ट कौन करता है? Who selects the chairperson and other members of Lokpal? Yes, that's a question. Who selects? कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेलेक्ट नहीं करता. देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी. देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी जो मिलकर लोकपाल के चेयरपर्सन और बाकी सभी मेंबर्स को सेलेक्ट करती है. सो दिस सिलेक्शन कमिटी कंस्टिट्यूट्स ऑफ, बताइए कौन कौन मिलकर इस सिलेक्शन कमेटी को बनाता है? प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी. वकार प्रेसिडेंट नहीं. प्राइम मिनिस्टर. ओके, देन द स्पीकर ऑफ लोकसभा. देन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा. Then the Chief Justice of India. ओके, या तो सीजीआई खुद और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सीजीआई. या तो सीजीआई खुद सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होंगे, और अगर सीजीआई खुद नहीं हो सकते तो वो किसी भी एक्टिंग जज को, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज को नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो उनके बिहाफ पर जाएं इस सिलेक्शन कमेटी में. अपार्ट फ्रॉम इट, एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स. ओके, एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स जिनको जिनको रिकमेंड कर सकते हैं ये चारों मिलकर.
कोई भी eminent jurist. This eminent jurist can be a lawyer, he can be a retired judge, and this eminent jurist can be a professor as well. कोई professor of law, कोई teacher of law, कोई भी हो सकता है. Jurist means scholars in the field of law. So the selection committee constitutes of PM, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition and CJ. So जो चार लोग सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं वो है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, रिमेंबर दिस थिंग. एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. कमिंग टू द नेक्स्ट बॉडी, अब तक हमने तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज डिस्कस की हैं. द फोर्थ वन इज यूपीएससी. हाउ कैन वी फॉरगेट यूपीएससी. अभी रिसेंटली यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं और यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने वाला है इन जून. टेल मी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? सबसे पहले तो यही बता दीजिए. कहते हैं अंग्रेज हमारे देश में दो ही अच्छी चीज छोड़ के गए, पहला रेलवेज और दूसरा यूपीएससी. यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले से था, बट रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया. तो एट प्रेजेंट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. गाइस, आई वाज कंडक्टिंग अ क्विज. उस क्विज में क्वेश्चन था दैट वेदर यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. The students were saying that it was a non-constitutional body. Why? Because यूपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले से ही है. कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 को बना, लेकिन यूपीएससी तो उससे पहले से है. सो यस, इट इज ट्रू कि यूपीएससी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंग्रेजों के समय से चलती आ रही. अभी आपने उधम सिंह मूवी देखी होगी. उधम सिंह ने भी यूपीएससी के थ्रू ही आईएएस वो बने और वो फिर इंग्लैंड गए. ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. But remember, after the Constitution of India came into force, UPSC became a constitutional body. And at present, yes, it is a constitutional body. Article 315, जैसा कि नफीसा आप बता रहे हैं, that UPSC is a constitutional body under Article 315, Article 315. Okay, apart from it, UPSC से related कोई बहुत important बात नहीं है जो आपको जानने की जरूरत है. My dream is to become an IAS officer. Devendra, that's a good dream. And I wish you all the best. सपने बड़े ही देखने चाहिए, क्योंकि अगर सपने बड़े नहीं देखेंगे तो बड़ा अचीव कैसे करेंगे. The fifth important constitutional body is National Commission for SCs and STs. For SCs and STs. इस कमीशन के बारे में एक ही चीज जाननी जरूरी है, that whether it's constitutional or non-constitutional. There are two different commissions. National Commission for SC is in Article 338 and National Commission for STs is in Article 338A. And both are constitutional bodies. Both are constitutional bodies. Okay. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट लेकर आई. बता सकते हैं मैं किस अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ? Yes, which amendment I am talking about?
talking about the 102nd amendment. Do you know about this amendment? Tell me. 102nd Amendment Act to the Indian Constitution. Have you guys heard about 102nd Amendment? 102nd Amendment से एक और नेशनल कमीशन ऐड हुआ है. It is National Commission for backward classes or socially and economically backward classes. Or simply you may say for backward classes. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 से है, बट 1993 से 2017 तक 2018 तक आई एम सॉरी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी. बट 2018 में एक अमेंडमेंट आया. दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज 102nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया. Now it is a constitutional body. Under which article? Under Article 338B. तो Article 338 बहुत important है. Under Article 338, okay, under Article 338, 10% रिजर्वेशन देवेंद्र वो दिया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, वो आर फ्रॉम क्रीमी लेयर. वो अमेंडमेंट अलग है. ओके, दैट अमेंडमेंट केम अप इन आर्टिकल 15. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. So remember, the National Commission for SCs is under Article 338. National Commission for STs is in under Article 338A, and National Commission for Backward Classes is under Article 338B. जो सबसे रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है in 2008 by 102nd Amendment. इससे पहले ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हुआ करता था. Remember the law under which it was a non-constitutional body under the National Commission for Backward Classes Act of 1993. National Commission for Backward Classes Act of 1993 के अंडर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, but now it is a constitutional body. Okay, coming to one more important authority, and it is NHRC, National Human Rights Commission. Tell me, is it a constitutional body or a non-constitutional? सेंट्रल लेवल पर तो होता है, जिस तरह एपेक्स लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही फॉर ह्यूमन राइट्स मैटर देयर इज NHRC. एट स्टेट लेवल देयर इज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. Yes, you are correct. बका इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. क्लैट 23 का फॉर्म अभी नहीं आया है कार्तिक, अभी तो क्लैट 2022 ही कंडक्ट नहीं हुआ है. 23 का फॉर्म कैसे आ जाएगा? ओके, सो NHRC and SHRC, both of them are statutory bodies, means they are non-constitutional. They are statutory bodies. So under which law they are made? Under the Protection of Human Rights Act 1993. ये दोनों बॉडीज 1993 के अंडर में बनी थी, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट
of 1993. Got it? Under this statutory law, under this statute, these bodies are formed. NHRC, जो NHRC के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ओके, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. सो NHRC की मेंबरशिप की बात कर लेते हैं. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, एज आई टोल्ड यू, इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Members should be serving or retired judges of the Supreme Court, having special knowledge and practice in human rights. Okay, so NHRC के members की बात करते हैं. Chairman is always a retired Supreme Court CJI. Apart from chairman, there are 4 members. These 4 members should be retired or acting judges at the Supreme Court. Okay, these 4 members should be serving retired Supreme Court judges. Apart from it, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं. एक्स ऑफिशियो, व्हाट डू मीन बाय एक्स ऑफिशियो? बिकॉज दे होल्ड अ पर्टिकुलर ऑफिस, इसलिए वो इसके मेंबर्स. लाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन इसलिए है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन होल्ड करता है. इट मींस एक्स ऑफिशियो by virtue of holding another office. क्योंकि वो एक दूसरे ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, इसलिए वो इस ऑफिस को भी होल्ड करते हैं. So who are the ex officio members? Ex officio members are chairman of National Commission for Minorities, chairman of National Commission for Minorities, the chairman of National Commission for SCs, STs and National Commission for Women. यानी जो भी हमारे सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए जो नेशनल कमीशंस बनाए गए हैं उनके चेयरमैन. द फोर्थ इज नेशनल चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. गॉट इट? Statutory body and quasi bodies are non-constitutional because it's not. ऐसा नहीं है नफीसा, है quasi judicial body constitutional भी हो सकती है. Okay, like Election Commission of India is a quasi judicial body but it is constitutional body. जो भी body Constitution of India में given है वो constitutional body होगी. वो judicial भी हो सकती है, वो administrative भी हो सकती है, वो quasi judicial भी हो सकती है, वो legislative भी हो सकती है. These are the nature of bodies. Okay, क्वाज़ी जुडिशियल होना, जुडिशियल होना, एडमिनिस्ट्रेटिव होना, ये सब नेचर है. और जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इट कैन बी क्वाज़ी जुडिशियल, इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव, इट कैन बी जुडिशियल. गॉट इट? सर आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ मॉलश्री, फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ. सो रिमेंबर NHRC के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन.
माइनॉरिटीज, SC, ST एंड वुमेन, ये चारों हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं। तो इन चारों को के प्रोटेक्शन के लिए जो नेशनल कमीशन है, उन चारों के चेयरमैन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं NHRC के, जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के मैटर्स को देखती है। A lot of bodies are still left out, but due to shortage of time, इन सभी बॉडीज को हमें दूसरी क्लास में कवर अप करें। We have to cover up CVC, which is Central Vigilance Commission. We will cover up नीति आयोग. How can we forget it? नीति आयोग, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। It is a think tank of Government of India. Apart from CVC and नीति आयोग, I don't think और कुछ रहा है, यही सब रहा है। एंड यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिटेल डिस्कशन। So these three bodies we will discuss again in another class. कार्तिक, जरूरी नहीं है कि चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हो। प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन इज रेखा शर्मा, एंड एज फार एज आई नो, बिकॉज मैं तो उनसे पर्सनली मिला भी हूँ रिगार्डिंग अ केस ऑफ ऑनर किलिंग, तो रेखा शर्मा इज नॉट एफिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। वकार, timing of next class definitely you will get over the telegram group, don't worry. ओके, और नवकार अभी तो नेक्स्ट क्लास 15 मिनट में ही स्टार्ट हो रही है। इट्स ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। अनअकैडमी ऐप पर एक स्पेशल क्लास है एट 10:15 PM tonight. In this class we will discuss amendment procedure to the Indian Constitution. You can join me in this class on the Unacademy app. Unacademy app पर स्पेशल क्लास है tonight at 10:15. It is 10:05 already, तो 10 मिनट में क्लास शुरू हो जाएगी। We will discuss amendment procedure. All right, guys. With this, we are coming to the end of this class. And before ending, let me inform you with a surprise. एक surprise के साथ आपको शॉक नहीं करूँगा, खुश करूँगा। The surprise is that Unacademy store had opened up on 13th of March. The address is in Delhi, 30 Pusa Road, Old Rajendra Nagar, near Metro Pillar 121. And registration is mandatory to visit the Unacademy store. So do register before coming to this store. यहाँ पर आकर आप Unacademy की टी-शर्ट्स परचेज कर सकते हैं, Unacademy की बॉटल्स, Unacademy के बैग्स, Unacademy की जैकेट्स, बुक्स, Unacademy subscription, and you can also get to meet the counselors and educators there. Okay. So if you guys want to have a once in a lifetime experience and you live in Delhi NCR, then it's a place which is a must visit for you. Do visit the Unacademy store. Educator curated tests for CLAT. It is a specially created test by our top educators. Every weekday at 5 PM in the evening, our top educators come up with this 20 minutes, 20 marks and 20 questions test. केशव मालपानी सर करंट अफेयर्स के साथ मंडे को, ट्यूसडे को कीर्ति भटनागर मैम विद लीगल रीजनिंग, आयुषी राजपूत मैम विद इंग्लिश ऑन वेडनेसडे, श्याम सराफ sir comes up with quantitative techniques on Thursday, and Divya Kumar Garg sir comes up with logical reasoning on Friday. Learn Reasoning is a strategy batch for on reasoning modules for CLAT 2022-23 aspirants. It is starting on 25th of March and the language would be English. So do enroll to this batch with these three wonderful educators. And ये तीनों educators लेकर आ रहे हैं Learn GK and Current Affairs strategy batch on GK and Current Affairs for CLAT 2022 and 2023 aspirants. And it is launching on 23rd of March 2022, just in 3 days, and the language would be English medium. Learn Legal is a strategy batch for legal modules for CLAT 2022 and 2023 aspirants. It is starting on 23rd of March. The language would be English medium with these three wonderful faculties: Kirti Bhatnagar ma'am, Shubham Verma sir, and Ayushi Rajput ma'am. With this, I end this class, guys. Thank you. Do not forget to use the code SRT10. Bye bye. Good night. See you soon. Till then.